So today we'll be studying CBSE Maths Chapter 1 Roman Numbers. Roman numbers are the numbers developed by the ancient Rome. They do not use digits, but they use letters to express the numbers. So we will see what kind of numbers they are using. 1, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000. So just we will define it again. 1 is equal to 1. This is equal to 5. X is equal to 10. L is equal to 50. C is equal to 100. D is equal to 500. And M is equal to 1000. We will understand it by using an example. Let's say we have to write 19 in Roman. 19 will be equal to 10 plus 9. So 10 is X. 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1 9 होता है, तो 9 को इस तरीके से लिखा जाता है। 1 जो आता है x के पहले आता है, दैट इज इक्वल टू, सॉरी इसमें हमें इस तरीके से लिखा जाएगा। हम एक और एग्जांपल लेंगे से 25। 25 कैसे लिखा जाएगा? 10, 10 एंड 5। दिस इज हाउ 25 will be written. हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 14। 14 कैसे लिखा जाएगा? 10 और 5। 5 की जगह 5 माइनस 1 इज 4, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड दिस इज हाउ 14 विल बी रिटन। तो आज हमने रोमन नंबर सीखे हैं। रोमन नंबर्स वर डेवलप्ड बाय एंशिएंट रोम। दे यूज लेटर्स टू डिफाइन नंबर्स इंस्टेड ऑफ डिजिट्स। कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स भी लिखे जाते हैं इससे, बट टू हैव अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज हाउ it is written. Thank you. Share it and like it.